the connection between the, so here we have the connection between the utility and demand, and for that we made a diagram. Let us just connect the diagram. That the point to note here is कि जब हम अपने पास prices को गिरा रहे हैं ना basically, तो उसके according हमारे पास हम इसी लाइन को नीचे कैरी फॉरवर्ड कर दें, कनेक्ट कर देते हैं। हम जैसे ही आगे बढ़े तो हम नोट करते हैं कि हमारे मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ पे भी एक मूवमेंट हो रही है, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग अपने यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं ना, फ्रॉम यूनिट वन, सॉरी फ्रॉम यूनिट निल टू यूनिट वन, हमारे पास हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो रही है, क्योंकि जितना एक गुड को हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उतनी ही उसकी जो सेटिस्फैक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट जो है वो गिर जाती है। इसी तरीके से जब हम अपने पास प्राइसेस को चेंज कर देते हैं, यानी पहले हमने प्राइस को गिरा कर देखा, अब हम प्राइस को बढ़ा कर देखते हैं, ठीक है। आ जाए, अब हम एक डॉटेड लाइन बनाएंगे ताकि चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जाए हमको, कि जब हम प्राइसेस को बढ़ाते हैं यही होता है। हमें पी से पी टू, मैंने जब प्राइस को बढ़ाया, मैं मूव हो गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, और मेरे पास जो है मेरी क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट इज अ फेयर एनफ आर्ग्यूमेंट कि हमारी क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। मैंने लिख दिया क्यू डी से क्यू डी टू, मेरी क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। इसी चीज को मैं डायग्रामेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा और इसको कनेक्ट करके नीचे तक लेके जाऊंगा। यहाँ ये मैं लेकर चला गया, मेरे पास यहाँ पर डिराइव हो रहा है एक और पॉइंट, दैट इज पॉइंट सी, जिससे पता ये चल रहा है कि जब आपके कम से कम यूनिट्स आप किसी भी गुड के कंज्यूम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू है, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ एन एडिशनल यूनिट, वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। आप नोट करें, जब भी कोई भी चीज महंगी होती है तो उसको हम फिर ज्यादा संभाल कर रखते हैं, ठीक है ना, उसका ध्यान ज्यादा रखते हैं। तो इसी चीज को टैकल करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी टू, दिस इज हाउ द कनेक्शन इज गोइंग टू बी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो क्या लिखेंगे, समझना सुकून से। एंड इन प्राइसेस, बल्कि पहले तो डिक्रीज बनाया ना मैंने, तो पहले चलो मैं डिक्रीज का केस लिख देता हूँ। अ फॉल इन प्राइस फ्रॉम P to P1 will result in higher quantities bought from QD to QD1। ये मेरे पास आ गया। अब आगे इसको किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करूंगा? The higher the units consumed of a particular good, the lower will be its marginal utility. That is, when units increase from U to U1, the
marginal utility decreased from mu to mu1. Okay, beta, did you understand it? Yes. अब मेरे पास जब मैंने एक डिमांड का और यूटिलिटी का कनेक्शन बना दिया, तो अब मैं ऐसा तो नहीं देखूंगा कि भाई एक ही डिमांड का यूटिलिटी से कनेक्शन करना है। तो फिर इसीलिए मेरे पास इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट अराइज होता है, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है हमारे पास। बेटा, अगर इंडिविजुअल डिमांड की बात कर, मैंने लिखा सिंपल डिमांड ऑफ अ पर्सन और सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, उससे हम लोग जो है वो एक इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। सही है। और अगर मैं बात करता हूँ मार्केट डिमांड की, बेटा, तो मार्केट डिमांड इज द एग्रीगेशन ऑफ all the individual demand curves। ठीक है, ये मेरे पास आ गया मार्केट डिमांड। ठीक है, मैंने सब जितने भी लोग थे मार्केट में, सब लोगों की डिमांड को कंबाइन जब कर दिया ना, तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं हम अपने पास। तो अब जरा इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मार्केट में एक लड़की है जिसका नाम है अनुषा। ठीक है, अनुषा का डिमांड कर्व बनाते हैं। तो मैंने अपने पास बेटा दो एक्सेस बना दिए, सिंपल। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऑफ अनुषा बना दिया मैंने। ठीक है, एक बेसिक प्राइस निकाली। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट अ टॉफी जिसकी प्राइस है 5, अबाउट 5 टका बोले या 5 रुपीज बोले। ठीक है ना, ये आपका पॉइंट ए आ गया और ये आपकी क्वांटिटी डिमांड ऑफ टॉफी आ गई, जिसमें से आप ले रही है 10 यूनिट्स। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया प्राइस, यहाँ मेंशन कर दिया क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि यार जो अनुषा है उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग सी ई कहते हैं, उसका टोटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम लोग टी ई कहते हैं, वो कितना है। तो बेटा उसका एक फॉर्मूला है। अगर मुझे निकालना है कि अनुषा का कितना खर्चा हुआ है, तो उसके लिए बेटा मुझे देखना पड़ेगा कि अनुषा ने कितने यूनिट्स लिए किस प्राइस पे। तो बेटा टोटल एक्सपेंडिचर स्लैश कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब हमारे पास प्राइस कितनी है, 5 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, दैट इज 10। तो हमारे पास बेटा टोटल एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो आ रहा है 50। ठीक है, ये हो गया किसका, अनुषा का। अनुषा का केस मैंने वाइंड अप कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे अनुषा के बाद मार्केट में एक और लड़की है जिसका नाम है फ्लोरेट। ठीक है, तो फ्लोरेट का केस देख लेते हैं फ्लोरेट के साथ क्या हुआ। अब मार्केट में हमारे पास आ गई एक और लड़की जिसका नाम है फ्लोरेट, उसे भी टॉफीज बहुत पसंद है। ठीक है, तो उसकी भी टॉफीज की डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास बेटा तो एक बना ली, प्राइस और क्वांटिटी रिस्पेक्टिव, एक डिमांड कर्व बनाया फ्लोरेट का। सही है, ये आगे डिमांड कर्व फ्लोरेट का, ये फ्लोरेट की प्राइस आ गई जो कि
पी हमने क्या ज्यूम किया है, फ्लोरेट 5%, ठीक है। पॉइंट ए। अब आपको टॉफीज अगर ज्यादा पसंद है तो आपने क्या, कभी मैं क्वांटिटी डिमांड लूंगी 20, मेरी मर्जी, मुझे टॉफी ज्यादा पसंद है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब जरा फ्लोरिड के केस को भी थोड़ा सा इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लोरिड के साथ क्या हो रहा है। तो भाई फ्लोरिड का हम लोग को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने जिस तरीके से ये पूरा बॉक्स दिया था ना अनुषा के लिए, यही पूरा बॉक्स फ्लोरिड का भी देखते भी, फ्लोरिड का क्या चल रहा है हिसाब किताब। तो उसके लिए हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, अभी ये बॉक्स जो है जिससे मैं ग्रीन शेड कर रहा हूँ, ये मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फ्लोरेट होगा। तो मैं लिख देता हूँ सिंपल, अब यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे नहीं रहा मैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्लैश प्राइस, फ्लोरेट क्या प्राइस पे कर रही है और 20 बाय कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास फ्लोरिड का टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है 100, सही है। अब जब मैं इन दोनों को, फ्लोरिड को और अनुषा को प्लस कर देता हूं तो यहां पर आ जाता है इज इक्वल्स टू। इज इक्वल्स टू का मतलब ये है मार्केट डिमांड। मार्केट में दो ही लोग थे, फ्लोरिड और अनुषा, तो अब मार्केट डिमांड की डायग्राम बनाते हैं। देखना बेटा आप लोग, आपने अपने पास बेटा दो एक्सिस बनाए, ठीक है। ये आपके पास दो एक्सिस बन गए, या आपके पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड बन गया, ठीक है। मार्केट में बेसिकली जो गुड की प्राइस थी वो 5 रुपीज थी या 5 टका थी, और फ्लोरेट 10-20 यूनिट्स ले रही थी और अनुषा 10 यूनिट्स ले रही थी। दोनों के मिला के जो यूनिट्स बन रहे हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांड, वो है 30 यूनिट्स, ठीक है। ये मेरे पास आ गया प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब जरा इसी चीज को हम लोग समझ लेते हैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मैंने अपने पास द बॉक्स टू बी डिराइव्ड व्हिच शोज द अमाउंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मैंने इस तरीके से उसको शेड कर दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर स्लैश कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब यहाँ पर माइंडेड बेटा, ये वाला जो टोटल एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये कहलाएगा मार्केट का। मार्केट में अनुषा भी और मार्केट में फ्लोरेट भी है, ठीक है। तो वो मेरे पास कुछ इस तरह बन रहा है, 5 into 30, that is 150, the total expenditure or the consumption expenditure, total expenditure और consumption expenditure of the market। बेटा आप लोगों को समझ आया? So I did not get the market one. Market one is the aggregation of all the individual demanders, assuming there are two people in the market, see, ठीक है। So what I did was, I did is the horizontal summation of all the individual demand curves. When you combine the demand of Anusha and Florid, you get the market demand. So, what is the issue, Florid? Can you please explain? Why are we combining? In order to get the market demand, beta. Like, what's the use of it? I don't get it. Okay, okay. Firstly, you did, in the connection of utility and demand, you just talked about single person demand. So, what about the market demand? It's not only the individual that is connected to the utility, it's the market as well that is connected to the utility, right? That is the reason we derived our market demand. And you are supposed to
explain it in the answer as well. How? That I'll make you right now. I can't tell you right now because uh, you won't be able to get it. The question states, derive a demand curve. Let me tell you. Okay, just to clear off the confusion, the question is derive a demand curve by using utility theory. Now, tell me, Florid, how do you know that examiner is talking about market or individual demand? Tell me, with this just one word, demand curve. Do you know which demand curve he is talking No. about? That is the reason you are supposed to explain both of them so that there is no loophole in the Is exam. it limited to only two? It's no, 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 no. In my class, you're only two students, now. So I'm just taking market as two consumers only. It can be hundreds of the consumers. Then how am I supposed to explain? Explain what? Like, uh, you said like there's 100, it should be more than two. What is a Then market, Florid? Florid, what is a market? Tell me. Do you know the definition of market? Florid, you did it in AS. A market is a place where consumers and producers meet in order to trade goods and services. So it states the consumers. Consumers is a plural word which is more than one and uncountable, right? yes, So this is what the market is. So why are you worried regarding the explanation? What is the problem that you're facing? It's really simple. I'm sorry. No, 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 no need to sorry, no need to sorry, no need to sorry, beta. It's just the fact that uh, can you please explain the problem that you're facing? Because if you're saying that how do you explain market, so market is to be explained in the most precise manner. That is the place where consumers and producers meet in order to trade goods and services. And market can be made by combining all the consumers. And in this particular market, we have only two consumers, that is Anusha and Florid. So I just combine both of them in order to make a market. You see the definition, the market demand. What does it states? Read it out. Aggregation of all the individual demand curves. When I combine all the individual demand curves, I get the market demand. Okay, sir, got it. Still, if you have any problem, we can discuss further, no worries. But if you look at the question, it states just the demand curve. So you are supposed to explain individual and market demand both, so that the examiner gets a point of the individual demand curve as well as the market demand curve relevant to the utility. Sir, got it. No worries, beta. It's my job to make you guys understand the concept. So this is what the connection of utility and demand is. That is how you derive a demand curve. Okay, just please revise quickly so that I'll move forward. अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर बेटा एक चीज है जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस. So what basically consumer surplus is, let us have a look. ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली होता क्या. तो अगर सिर्फ सरप्लस को देख लें, ये टर्म सरप्लस, तो सरप्लस का सिंपल मतलब ये है समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा. और कंज्यूमर आपको पता है भाई, वो इंसान जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है उसे कंज्यूमर्स कहेंगे. ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई कंज्यूमर सरप्लस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है.
तो जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन the price a consumer is willing and able to pay for a good or a service, and the they actually pay। मेरे पास जो है वो कंज्यूमर और प्रोसेस सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले इसको सॉरी, प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं, सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस, अभी हम प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं पढ़ेंगे। अब जरा इसकी चीज देख लेते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अज्यूमिंग आप जा रहे हैं सिनेमा हॉल फिल्म देखने के लिए, ठीक है। नाउ यू हैव, लेट्स से फॉर एग्जांपल, 5,000 इन योर पॉकेट। ठीक है, ये जो 5,000 है, अगर आप 5,000 रुपए लेकर जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, और अगर 5,000 रुपए की टिकट है तो आप देकर फिल्म देख लेंगे, राइट। तो ये जो 5,000 है, दिस इज योर विलिंगनेस एंड एबिलिटी। ठीक है, अब विलिंगनेस और एबिलिटी के बाद जो मैं अगली चीज देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ कि भाई एक्चुअल में मैंने क्या पे किया। अब जब मैं सिनेमा हॉल गया तो बेटा वहां पर मैंने देखा कि जो उसकी टिकट थी वो थी 1,000। 1,000 इज माई एक्चुअल, तो ये है मेरा एक्चुअल पे। आप देख सकते हो एक्चुअली पे। और जो मेरा विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे है वो ये रहा आपकी डेफिनेशन में। अब मुझे एग्जामिनर बोल रहा है कि आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 4,000। दिस 4,000 इज नोन एज द कंज्यूमर surplus. So the consumer surplus is difference between the amount a consumer actually pays for a good or service versus the amount they actually pay. ठीक है, कोई इशू, कोई मसला? Again the Is definition. this a substitution of budget, What? or is it a synonym of budget? No, 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 no. It's not that. It's just the Okay. consumer surplus, that is जो आपके पास पैसे बच जाएंगे ना एंड ऑफ द डे, दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं। मैं अपने पास डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इस तरीके से एक डिमांड कर्व बना। अब आप नोट करना, मैंने डिमांड कर्व को वाई एक्सिस से कनेक्ट करके बनाया है, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस के अंदर हमेशा डिमांड कर्व वाई एक्सिस से कनेक्ट होके ही बनता है। क्वांटिटी डिमांडेड, आई राइट इट हियर। ये आपके पास एक बेसिक प्राइस आपने निकाल ली, ठीक है, पी। ये आपके पास पॉइंट ए, ये आपके पास आ गया क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अच्छा, अब जरा समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो एक्चुअल में मैं प्राइस पे कर रहा हूं वो है ये। बट द पॉइंट है कि मैं बेसिकली जो है वो इस ए पॉइंट तक पे कर सकता हूं भाई। अगर प्राइस बढ़ती भी जाए तो मेरी क्वांटिटी जरूर कम होगी, लेकिन मैं पे तो कर सकता हूँ। अग्री कर रहे हैं इस बात से? बोले बेटा, बोले बोले प्लीज। क्या हो गया यार? Sir, what? आई एम सेइंग कि मेरे पास जो ये वाला एरिया है, ये जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, आप देख सकते हो इस ट्रायंगल को। हमारे पास कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है।
आपको ट्रायंगल शेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है, दिस इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, कि मेरे पास मैं प्राइस पे जो कर रहा हूं वो ये रही। तो जो मैं पे कर सकता था वो ऑन द टॉप है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बेसिक ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल में हो क्या रहा है, द एरिया above the price So then which level. triangle is for willingness and ability? It's not the triangle, it's the square, which is for willingness and ability. I'll show it. Hold on. The area above the price level, ये रहा मेरा area above the price level, आप देख सकते हो, and below or under the demand curve, that is this area, is my consumer surplus. As far as the amount that a consumer have paid, this is the area that is not included in consumer surplus. तो हमारे पास, हम देख सकते हैं हमारे पास एक एरिया ऐसा है जो कंज्यूमर सरप्लस में इंक्लूड नहीं हो रहा। आप देख सकते हो ये वाला एरिया, वो एक ट्रायंगल नहीं है, वो एक रेक्टेंगल है बेटा फ्लोरेट। समझ आ रहा है आपको? अभी आपको What थोड़ी देर about the पहले, small triangle? स्मॉल ट्रायंगल, देयर इज नो ट्रायंगल हियर, कैन यू एक्सप्लेन On the दैट? last one, बेटा देयर इज अ गैप, हाउ कैन इट बी अ ट्रायंगल? why there is a gap? Oh my god, why there is a gap? What is the definition of demand? What is the definition for it, please? For it, hello, for it. Okay, I Willingness don't and know whether, ability to yeah, buy. willingness and ability, right? So, can the willingness be limited? Tell me. No. So, if you just connect this demand curve to the axis, don't you think the willingness will be limited? This shows that you only are willing to buy this quantity. This can this ever be a case? Oh, okay. So I Good thought point. from No, 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 no. this Don't time worry. I thought I like have you just drew the line just like that. I didn't know there was a meaning behind it. no worries. So here we're clear with the concept. So this rectangle represents the consumer expenditure or the producer revenue, and the triangle represents the consumer surplus, right? Now there is a change in consumer surplus. I can see in this diagram that the area above the price level and below the demand curve is known as consumer surplus. Fair enough to the argument. Now I'll change the consumer surplus. Let us have a look at this another diagram. Okay, I'll draw the downward sloping demand curve like this. This is my demand curve. Okay, I'll just connect it. I'll derive the basic price here, the basic quantity, price and quantity demanded with a point A. I'll write it here, the price and the quantity demanded. Now I'll just write down the key of the diagram here as well.
What is the key? You'll understand. Just give me 1 minute. This is point A. So here, what is consumer surplus? The consumer surplus is area of P, Triangle. yeah, PAE. Do you agree, Anusha and Florent? Yes. Okay. Now, when there is an increase in the price, let's have a look at it. When there is an increase in the price from P to P1, the quantity reduces from QD to QD1, and there is a movement along the curve from point A to point B. What is the consumer surplus now? It is P1, A, and B. Is that clear? Moving forward, if you increase the prices more, your actually paid amount increases, resulting in fall in the difference Q2 point C. Now the consumer surplus is reduced. That is P2, A, and C. Is that clear? Beta, please confirm so that I can move forward. Sir, सर इधर कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी. क्या कंफ्यूजन sir, होती है मेरी can प्यारी you, बहना? बोले. sir, can you go slowly? नो वरीज बेटा. अच्छा, अब अगर मैं प्राइस को जब रिड्यूस करता हूँ पी से P3, अब देखो मैं प्राइस का रिड्यूस का आपको इफेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो इससे मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है QD से QD3, और मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस, अब आप देखें क्या आता है, मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट कलर से लिखूंगा. कंज्यूमर सरप्लस वो मेरे पास आ रहा है P3, A ए एंड D. ऐसा ही है. बोले बेटा, बोले. शाबाश. Sir, if you don't mind, can you explain this graph again? नो वरीज, कोई मसला नहीं है बेटा. आपको मुझे तो ये बताया फ्लोरेंट सबसे पहले कि प्रॉब्लम कहाँ आया, प्रॉब्लम बताया मुझे, फिर मैं ग्राफ पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको. So actually, I couldn't catch you the whole time for this graph. Okay, no worries, I'll just redo it. Okay, so that you are able to grasp it in the best possible manner. Okay. अच्छा, अब देखो फ्लोरेंट, मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कंज्यूमर सरप्लस के अंदर? No. ओके. अब मैंने क्या किया, जब मैंने प्राइसेस को इंक्रीज किया फ्रॉम P टू P1, मेरी क्वांटिटी कम हो गई, दैट इज QD Yes. टू QD1, और मैं मूवमेंट लॉन्ग द कर्व से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया. तो अब मेरे कंज्यूमर सरप्लस की क्या सिचुएशन होगी? वो कम होगा ना, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है. Yes. तो वो इस तरीके से हम लिखेंगे कि नाउ द कंज्यूमर सरप्लस इज P1, A एंड B. ठीक है? इज दैट क्लियर? Okay. सर वाई P1 मतलब P2 क्यों नहीं, क्योंकि P2 भी और मतलब मैंने लिखा P1 है, P2 नहीं लिखा मैंने. ओके सही है. ठीक है? फिर उसके बाद जब प्राइस को मैं और बढ़ाता हूँ P से P2, तो आपका कंज्यूमर सर्विस QD से QD2 आ रहा है. आप पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जा रहे हैं, और आपका कंज्यूमर सरप्लस अब देखो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा P2, A एंड C. इज दैट क्लियर? So why are we ignoring the B? What P is the price? P2. Oh, B. Like, why are we ignoring the B for A and C? The initially the price was
P and the point was A. Now the price has increased. So when the price has increased, you won't have a look at the basic price. And when there is further increase in price, you won't look at the previous price. Okay. That is the way you're gonna show examiner, na? These are the changes. And then I'll show you how the consumer surplus increases. Because when the price falls from P to P3, the quantity increases, moving from point A to point C. Now the consumer surplus is P3, A and D. Is that clear? Yes. Florent? Yeah, sir. Okay. So this is how you're gonna explain what consumer surplus is. Now there is one more thing that is, I'll just write it down. Hold on. Marginal consumer surplus. So what is marginal consumer surplus? I'll write down the definition. The additional satisfaction a consumer gains from one more unit of a good or service. What does this mean? Tell me. What does this mean? Tell me. सर जैसे 14 यूनिट्स है और कंज्यूमर जो है वन और बाय कर रहे हैं उसमें लाइक ऐड हो रहे तो 15 हो जाएंगे तो उससे जो उससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी. कैसे प्रूव करें? Sir, is it like the free items with a product? No, free. You don't have to pay the price for free items, no? So it cannot be applied. So that's why it's a additional satisfaction. Yeah, exactly. अब मैं आपको इसका समझाता हूँ, सब सुनेगा मेरी बात तो मैं So एक is और. it like buy one get one free? It can be possible in that case because you're paying a price. अब जरा समझे, मैं एक चीज लिख रहा हूँ. कंज्यूमर surplus is based on the economic theory of marginal utility, which is the additional satisfaction a consumer gains from one more unit of a good or a सर्विस. ठीक है. अब अगली चीज देखते हैं. वो हमारे पास है कंज्यूमर surplus always increases as the price of a good falls
and decreases as the price rise। तो एक चीज समझने की यहाँ पर ये है कि what is basically the relation between the consumer surplus and the marginal utility। देखो एक चीज समझो, अगर मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं और जो है वो कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से अ कस्टमर who is willing to pay $3 for a hot dog buys one for $2, right? So this means that $1 is remaining, that is for consumer surplus. But next time, what will happen is that if he is hungry, he would be willing to pay only $2.50. Why? Because there is the consumption of an additional unit, which reduces the utility of a particular hot dog. And then, if the utility is falling, the consumer surplus will also fall. What does this explains it to you? That the relation between the law of diminishing marginal utility and consumer surplus is positive। मतलब इसका ये है कहने का कि अगर मैं एक हॉट डॉग ले रहा हूँ और उसके लिए मैं पैसे लेकर गया $3, मगर मुझे हॉट डॉग पड़ रहा है $2 का, ठीक है। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम हंगरी हूँ और दोबारा मैं हॉट डॉग लेने जाता हूँ, तो मुझे तो पता है कि $2 का हॉट डॉग है, तो मैं यहाँ तक फिर भी ₹2.5 लेकर चला जाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हॉट डॉग मैं ऑलरेडी पहले खा चुका हूँ, अब मैं दोबारा वही हॉट डॉग खा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली मुझे उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो पहले वाले हॉट डॉग की तो मिलेगी नहीं, कम ही मिलेगी। और जब कम यूटिलिटी मिल रही है तो कंज्यूमर सर्विस भी मेरा कम है, क्यों? बिकॉज आई एम विलिंग टू पे लेस। It's not a different item, it's the same item, and for the same item जाहिर सी बात है I would be willing to pay less। Did you agree? Did you understand? मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लिख के देता हूँ। एज मार्जिनल यूटिलिटी declines, so sorry, my mistake, so does consumer surplus। For example, a consumer willing to pay $3 for a hot dog buys one for $2, that's $1 worth of consumer surplus। Next time around is not as hungry and he he'd be willing to pay maybe $2.50। So his marginal utility has dropped, right? So does his consumer surplus। Is that clear, Anusha and Floret? यस सर।
फिर आज की क्लास को बेटा यहीं पर एंड करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड बाय। सर Good आप night, sir. थोड़ी सी